Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Miss Ulfat Amin, PG Pediatric Nursing, Diploma in Nursing Administration. And today in this video, I will be discussing trends in pediatric nursing. Trends. In earlier days, medical care given to both adults and children was same, but nowadays it's given special attention, or we can say children are given special attention. Why? Because the mortality and morbidity rates are higher in these age groups, or we can say the child is not treated as adult now when we plan or when we provide care to him. And now in this pediatric nursing, while giving care to the child, we focus on the child, his family, and to his environment. The reason for this was the low birth rates, high infant and child mortality and morbidity rates that were existing in our society, or we can say that is still existing in our country. Factors influencing these trends. If we see remarkable changes have occurred in the field of pediatric nursing in recent years due to changing needs of society, due to medical and technological advances, due to political interests, due to consumers demands. Like if we see जो हमारी सोसाइटी है उसकी जो अभी नीड्स है वो चेंज हो रही है डे टू डे, या जो अभी टेक्नोलॉजीज़ है वो एडवांस हो रही है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं जो पीडियाट्रिक्स में इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड केयर को, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है. पहले बच्चों को इम्पोर्टेंट मेंबर नहीं समझा जाता था सोसाइटी का, बट नाउ दे आर कंसिडर्ड वाइटल फॉर आवर सोसाइटी, या कंज्यूमर्स डिमांड्स बढ़ गई है, और वी कैन से लोगों में एवियरेंस ज़्यादा आ गई है. Now the trends in the pediatric nursing. What are the different trends? That is high technology care, primary nursing, case management, evidence-based practice, or a child-oriented environment, cost containment, and traumatic care. We will discuss them. First is family centered care. What is family centered care? अगर हम देखेंगे जो पीडियाट्रिक्स में जो भी क्वालिटी केयर प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, वो प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी फैमिली सेटिंग क्या है, उनके कल्चरल बिलीफ्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके जो भी उनका एनवायरनमेंट क्या है, या उस फैमिली के हैबिट्स वगैरह क्या है. तो एज़ पर दैट एनवायरनमेंट उसको केयर दिया जाता है, ताकि हम उसको साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली उसकी हेल्थ को डेवलप करें. और हम प्रेफर करते हैं, अगर हम ये देंगे बच्चे को फैमिली सेंटर्ड केयर देंगे, मींस एज़ पर फैमिली या फैमिली सेटिंग्स में केयर देंगे, तो उसको क्या होगा, साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ही विल गेट बेटर, ही विल फील बेटर. तो इससे लोगों को एनेबल किया जाता है कि आप उनकी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाती है, या उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ या कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाया जाता है, ताकि वो एक डिफरेंट मेथड ऑफ कोपिंग को रिकॉग्नाइज कर सके. एम्पावरिंग क्या है, इंटरेक्ट सम सच दैट फैमिलीज मेंटेन और एक्वायर सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड एक्नॉलेज पॉजिटिव चेंजेस, और उनको एम्पावर करना कि वो केयर गिवर केयर जो है उसको रिकॉग्नाइज करे, या वो देखे कि कौन सी पॉजिटिव चेंजेस है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, या अपनी डे टू डे लाइफ में वो उन पॉजिटिव चेंजेस को एक्नॉलेज करे और उनको एक्सेप्ट करे. Next is high technology care. What is high technology care? If we see, high technology care is given in a day-to-day life. Like there are so many advancements in the medical field. Like diagnosis of diseases have become easy. Like computerized prescription orders are now given. Radio frequency identification of data is now possible. Or we can say new treatment modalities have emerged, or a detection of the genetic disorders, or we can say different congenital disorders in intranatal, perinatal, or postnatal life are now possible at early. And non-invasive diagnostic tools are
now being used in the pediatric nursing. These are the technologies that have emerged in the pediatric. Evidence based practice means that the care is being given as per new research, or we can say to make quality decisions while providing the nursing care, or provide a nursing care that is based upon clinical expertise in combination with current relevant research, or we can say current new relevant research. For example, oxygen used in patients with a COPD. If we talk about that, for patients' health and safety, it's essential that nurse follows evidence-based practice in nursing when it comes to giving oxygen to the patient with the COPD. Despite the belief of some that providing oxygen to these patients can create serious issues such as hypercarbia, acidosis, or even death, the evidence-based protocol is to provide oxygen to the COPD patients. Why it helps to reduce or to prevent hypoxia, to prevent organ failure by giving oxygen in a corrective treatment, is a corrective treatment, or giving oxygen based on the evidence can enhance COPD patients' quality of life and help them to live longer. Now, the child oriented environment. Child friendly environment should be provided to the child who is admitted to the hospital, like skilled staff for the child should be there, liberal visiting hours should be there, or we can say child friendly environment, playing games should be in the hospital, ताकि जो बच्चे हैं वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस ना हो जाए, या उनको सेपरेशन एंजाइटी ना हो जाए, उनको स्ट्रेस ना हो जाए वहाँ पे, ठीक है. Traumatic care includes the care to the child that is physically and psychologically distress free for him. Care which would prevent child separation from a family, care which minimizes bodily injuries or pain. It's psychologically and physical distress को ये प्रिवेंट करता है, ये ट्रॉमेटिक केयर. लाइक साइकोलॉजिकल में क्या आता है, उसको एंग्जाइटी नहीं होती है, उसको फियर नहीं होता है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है, सैडनेस नहीं होती, शेम नहीं होता है, गिल्ट, दैट इज़ सेपरेशन, वी कैन से सेपरेशन एंग्जाइटी उसको नहीं होती है फ्रॉम फैमिली से. एंड फिजिकल इज़ उसको इंजरी नहीं होती है, पेन नहीं होती है, स्लीपलेसनेस नहीं होती है, लाइक वहाँ हाई टेम्परेचर नहीं होता है, लाउड नॉइज़ नहीं होता है, ब्राइट लाइट्स नहीं होती है, मीन्स डिस्ट्रेस फिजिकली उसको नहीं होता है. Three principles provide the framework for achieving the goal: prevent or minimize child separation from the family, promote a sense of control, and prevent minimize bodily injuries or pain to the child. And now the cost containment. What is the cost containment? Cost containment is to reduce the cost of hospitalization. क्यों हमें कॉस्ट कंटेनमेंट करना है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी है, हम कहते ही हमें प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ केयर देना है दैट इज़ अफोर्डेबल एंड एसेसिबल टू एवरीवन. इसीलिए कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस करना है, मोर्टेलिटी रेट्स रिड्यूस करने हैं, हॉस्पिटल स्टे रिड्यूस करना है, कॉम्प्लिकेशंस जो होती है चाहे इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो वो रिड्यूस करनी है, फैमिली सेटिस्फेक्शन हमें इंक्रीज़ करनी है, एंड डुप्लीकेशन ऑफ द नर्सिंग केयर वो हमें प्रिवेंट करना है. And the primary nursing. What is the primary nursing? If we see, the primary nurse is one who is wholly responsible for the patient, or we can say for the client. During working hours, she provides total care to the patient, and during off hours, she is available on the call that very patient. And case management care is given. She must be a graduate nurse with advanced skill in case management and communication. उसको authority होती है plan करना, implement करना, and evaluate करना care for the patient. And she is or she can follow the patient from diagnostic process through hospitalization, through rehabilitation, जो भी phase से patient गुजरे, and back to the home. Thank you. This was all about this topic. I hope you have got an idea what are the different trends in the pediatric nursing. Allah Hafiz.